का सेक्टर और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर, तीनों बूम कर रहे हैं और इस तरह बूम कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने पिछली 2 दिहाइयों में कभी नहीं किया। एग्रीकल्चर में हमारी रिकॉर्ड क्रॉप्स हुई हैं, 1100 अरब रुपया फार्मर्स के पास गया है पिछले साल। टेक्सटाइल के अंदर आप किसी भी टेक्सटाइल मिल चले जाएं, वो इस वक्त एक्सपेंशन पे लगी हुई है, उसके ऑर्डर्स इतने हैं कि वो बीट नहीं हो सकते और उसकी एम्प्लॉयमेंट इतनी है कि उसके पास लोग कम पड़ जाते हैं। फैसलाबाद जाके आप देखें, आपको पता चल जाएगा टेक्सटाइल में क्या बूम आया हुआ है इस वक्त। तीसरा हमारा हाउसिंग का सेक्टर है, जिसको खान साहब ने एक टारगेटेड पॉलिसी के जरिए कि हम हाउसिंग सेक्टर को हमने बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हाउसिंग सेक्टर बूस्ट करता है तो 19 और इंडस्ट्रीज के साथ बूस्ट करती हैं। वो भी इंशाल्लाह आज तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो काम पे लगे हुए हैं और एक रिकॉर्ड हाउसिंग सेक्टर के अंदर एक्सपेंशन हो रही है। दूसरा जो हमारा पिलर है गवर्नमेंट का, वो सोशल पिलर है और उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं रियासत मदीना की और जब ये बात करते हैं कि हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल को अपनाना है, तो ये मॉडल क्या है? बड़े आसान लफ्जों में ये है कि नया पाकिस्तान सबके लिए। ये एक ऐसा पाकिस्तान है जो कि एलिटिस्ट पाकिस्तान नहीं होगा, ये एक ऐसा पाकिस्तान है जिसमें जो आपके बेनिफिट्स आते हैं इकोनॉमी के, वो तमाम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। और उस सिलसिले में एहसास का पूरा प्रोग्राम जो है उसका टारगेट ये है कि जो भी फायदा होता है हुकूमत को, जो भी टैक्स रेवेन्यू आता है, जो भी पैसा बढ़ता है, वो सबसे ज्यादा सबसे निचले तबकों को उसकी जरूरत है उधर तक पहुंचाया जाए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम इसका एक जुज्व है। इसी तरह हेल्थ कार्ड, जिसके जरिए आज हर पाकिस्तानी अपने जेब में 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस लेके फिरता है हेल्थ के लिए। गरीब और अमीर में कोई तफरीक नहीं है उसमें, वो भी इसी सोशल सेक्टर का एक अहम जुज्व है। तीसरा हमारा पिलर एक इकोनॉमिक सेक्टर है, सोशल सेक्टर है और तीसरा पिलर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है और जो आज से पहले किसी हुकूमत ने इस पे फोकस नहीं किया, वो है एनवायरनमेंट का पिलर। आप लोग चूंकि दुनिया में उन ममालिक से आए हैं ज्यादातर जहां पर इस फैक्टर को समझा गया है, जहां पर एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कभी किसी लीडर को इसका ख्याल नहीं आया था। लेकिन आज इमरान खान ने इसको अपनी मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का एक अहम जुज़ बनाया हुआ है और जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसीज हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, जो हमारी ग्रीन पॉलिसीज हैं, वो तमाम दुनिया उनकी तारीफ कर रही है और ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखाएंगे कि कौन से लीडर पाकिस्तान के मुतालिक एनवायरनमेंट के ऊपर क्या बात कर रहे हैं। Pakistan's 10 billion tree tsunami, restoring 1 million hectares of degraded. वफाकी वज़ीर माहौलियात मलिक अमीन असलम समंदर पार पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा रही है। मलिक अमीन असलम ने कहा कि नए पाकिस्तान की बुनियाद 3 अहम सुतून है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। हुकूमत के ग्रीन पाकिस्तान पॉलिसी को दुनिया भर में सराहा गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट। पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 148 रन बना सकी है। ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 408 रन की बरतरी हासिल हो गई है। मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से सबसे हाई स्कोरर बाबर आजम रहे जिन्होंने 36 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले अपनी पहली इनिंग्स 556 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। कराची टेस्ट का तीसरा दिन है। दूसरा टेस्ट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान 148 रन बनाकर आउट हो चुका है। और एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। Here he goes again.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। आज आपसे सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट मैच की जो नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। अब से जो लेटेस्ट खबर आई है से कुछ देर पहले ही, जो कि ब्रेकिंग न्यूज भी अभी आपने मुलाहिजा फरमाई, वो ये है कि पाकिस्तान की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 148 रन पर आउट हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया 401 रन की बर्तरी हासिल है। बाबर आजम कप्तान जो हैं वो सबसे ज्यादा 36 रन बना पाए। इसके अलावा पूरी टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इतना कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, नेथन लाइन ने भी विकेट्स ली, एक दो हमने रनआउट्स भी देखे जो हुए। ओवरऑल मिजरेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हम बार बार पिच की बात जरूर कर रहे थे, पिच को लेकर पूरा पाकिस्तान एक्सपर्ट नजर आ रहा था, लग रहा था कि सारे ही क्यूरेटर्स हैं। इस पिच के बारे में भी बहुत बात हुई, बट मेरे ख्याल से क्रेडिट देना होगा राशिद लतीफ साहब को, क्योंकि राशिद भाई ने जिस तरह एक दो दिन पहले जो उनका यूट्यूब का प्रोग्राम है कॉर्ड बिहाइंड, उसमें डॉक्टर नुमान न्याज के साथ जो उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि कैसे विकेट चेंज हो सकता है, कहां पर हमें रिवर्स स्विंग नजर आएगा, कहां पर बॉलर्स को जरा कुछ मदद मिल सकती है। तो वो वैसा ही हुआ जैसा राशिद भाई ने प्रेडिक्ट किया था। तो राशिद भाई को हम हमेशा गुरु कहते हैं क्रिकेट का, तो वो गुरु लाजमी है और नाना ने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया और वही हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने आज डोमिनेट किया। पाकिस्तान ओवरऑल पहले दिन से ही बॉडी लैंग्वेज, काफी लोगों ने ट्वीट भी किया कि यही नजर आ रही थी कि शायद पहले दिन से ही ड्रॉ खेलना चाह रहे हैं। तो जब आप इतनी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ जाते हैं फील्ड में तो इससे क्या मैसेज जाता है, ये हमने जरूर डिस्कस करना है आज। और रिगार्डलेस के पिच कैसा है, आपकी अपनी इंटेंट क्या है, ये बहुत मैटर करती है, ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में बल्कि तमाम फॉर्म ऑफ द गेम में। आपसे जरूर ये बात, बड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज है और वो ये है कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम एक बार फिर मुसलसल शिकस्त का शिकार है। बांग्लादेश से भी वो अपना मैच हार गई। जो हमारी गर्ल्स इन ग्रीन है, लग रहा था कि वो जीत सकेंगी, बट अनफॉर्चुनेट सिनारियो है कि अब वो अभी तक कोई मैच नहीं जीत सकी। अगर ओवरऑल आप बात करें, साउथ अफ्रीका से हारी, ऑस्ट्रेलिया से हारी, इंडिया से हारी और अब बांग्लादेश से भी हार गई। तो मेरे ख्याल से वुमेन्स क्रिकेट को अगर आपने उठाना है तो अब इट्स नाउ एंड नेवर। आई थिंक दोनों साइड्स पर यही चल रहा है इस वक्त। इसके बाद आप टूर्नामेंट उसके साथ उस मुनक्कद किया गया इवेंट ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने मुनक्कद किया है और इनको सपोर्ट करिए पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन। और इसका गोल ये है कि जो ये जिनको हम कहते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, स्पेशली विजुअली इंपेयर्ड जो लड़कियां हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपने स्किल्स को मजीद पॉलिश करें और आगे पाकिस्तान के लिए नाम बना सकें और ब्लाइंड क्रिकेट में भी अपने लिए भी वो नाम बना सकें। और इसके बाद आपको जरूर बताएंगे T20 का ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज जो है पाकिस्तान के भारत को 29 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान 191 रन के जवाब में भारतीय टीम 6 विकेटों पर सिर्फ 162 रन बना सकी। यह है आज की तमाम लाइनअप जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले टेस्ट मैच से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं इमरान झंझुआ। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद। इतने दिनों से हम चाह रहे थे कि पॉजिटिविटी आए, पिंडी टेस्ट में भी हमने ये बात की कि पॉजिटिव वाइब्स आए। सबसे पहले तो ये बताएं, आपने भी अब से कुछ देर पहले ब्रेकिंग न्यूज सुनी, 148 रन ऑल आउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अहमद, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जब बैटिंग शुरू होनी थी तो वहां पे ड्रेसिंग रूम में कौन कौन गया था? मैं तो नहीं गया था, तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स ही गए होंगे। देखिए, जो मैं जिस तरह इसको देख रहा हूँ, आई हैव कवर्ड क्रिकेट फॉर द लास्ट 2 months इंक्लूडिंग PSL विद यू। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो पाकिस्तान को अच्छा खेलते हुए देखना और पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग है इट शैल बी फ्लाइंग हाई। हम यही बात करते रहे हैं। बाबर आजम PSL में परफॉर्म नहीं किया, बट हम हमेशा ये कहते रहे कि बड़े कप्तान हैं और दिखाएगी टीम जब आएंगे। देखिए, P फॉर पाकिस्तान है जी, P फॉर पिच भी है। और एक और सवाल आपसे मैं ये करता हूं कि लास्ट टाइम आपने कौन से क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को पिचेस के ऊपर ट्वीट या पिचेस के ऊपर क्लैरिफिकेशन देते हुए सुना? मैंने तो खैर नहीं सुना, लेकिन ये मुझे पता है कि जब ये वाले चेयरमैन आए ऑफिस में तो बहुत ज्यादा एक विजनरी चेयरमैन थे पिचेस को लेकर, जहां पर उन्होंने ड्रॉपिंग पिचेस की बात की। अब मजीद गुफ्तगू करने से पहले मैं नाजरीन को यह भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन एनफोर्स नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी लेकिन मेरा ख्याल है राजा साहब भी यहाँ पे ओन करेंगे कि बहुत सारी चीजें गलत कही हैं। पिच के ऊपर बहुत बातचीत हुई। आई एम श्योर कि उनके बोलने से पहले PCB के पास बहुत सारे और लोग हैं जिनका काम था कि वो पिच के ऊपर अगर तो किसी ने बोलना है
तो वो बात की जाए। देखें, ये एक इंटरनेशनल प्रेशर बिल्डअप हुआ इन टर्म्स ऑफ कि जी पहले टेस्ट मैच के अंदर ही पिच के ऊपर इतनी बातचीत आ गई। पूरी दुनिया के अंदर हमने भी मैच देखा, ऑस्ट्रेलियन के साथ बैठ के देखा है, उनके क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स एसोसिएशन के जो चीफ्स थे उनके साथ मैंने जब पहले दिन देखा और वहां पे बात हुई, व्हेन ही सेड 1000 रन फर्स्ट डे, 1000 रन सेकंड डे, तो मैंने उनको याद करवाया कि जो भी टेस्ट क्रिकेट जो हमने देखी है उसमें हमेशा इंडिया जो है वो 3-3, 4-4 स्पिनर्स के साथ खेलता था और 5-5 दिन और बहुत ड्रॉज मैचेस होते थे। इसी तरह डाउन अंडर में आपको पुराने अगर आप एशिया सीरीज उठा के देखेंगे तो तमाम जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो अपने मुताबिक, अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो क्रिकेट खिलाते हैं। सिर्फ ये T20 हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि मेरा ख्याल है कुछ सवाल हैं जो मेरे हैं क्रिकेट बोर्ड से। आई एम श्योर कैलेंडर को देखना पड़ता है, लेकिन कैलेंडर आपने सेट करने होते हैं। एक इतना बड़ा T20 चैंपियनशिप के फौरन बाद 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की ये टीम, मेरे ख्याल में ये 70 साल में पाकिस्तान में जो आज तक कभी टीम्स आई हैं, ये उनकी सबसे तगड़ी तरीन टीम है, क्योंकि हमने बात की है अहमद, इसमें कोई वीकनेस नजर नहीं आती। उनके सिर्फ एटीट्यूड्स देखें आप, वो क्रिकेट तमाशाइयों के साथ भी जो है ना दे आर डूइंग फन। दिस शोज द कॉन्फिडेंस लेवल मानस लबुशन और डेविड वार्नर और पूरी टीम जिस तरह है। फिर प्रेपरेशन एंड प्रोसेस का नाम क्रिकेट है, फिर कमिटमेंट टू द प्रोसेस बहुत जरूरी होता है एग्जीक्यूशन में। तो मेरा ये ख्याल है कि जो एक चीज हुई है जिसके बारे में मैं भी जानना चाहूंगा, एंड आई विल टॉक टू नॉट जस्ट इकलान मुश्ताक, बस हर एक से जहां भी बातचीत होगी, कि जब आप अपनी 500 रन हो गए, जो स्टैट्स और ओवर्स थे वो वही थे जो पिंडी के अंदर थे, तो पिच ऑलमोस्ट सिमिलर थी। लेकिन इस तरह की अभी भी हम बाद में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बैटिंग खुद शुरू कर दी है और आगे क्या होगा। लेकिन कम बैक टू इट, कुछ क्वेश्चंस हैं जी। पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जब पाकिस्तान टीम अभी बैटिंग के लिए जा रही थी, तो अगर आपने ये सारा प्रेशर, ये जो बिल्डअप था, ये क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो पिचेस के बारे में राइट लोग राइट जगह पे बातचीत करें। फिर क्रिकेट टीम का और हर चीज ट्विटर के ऊपर आ जाना और सोशल एंड डिजिटल मीडिया, जिस तरह आपको पता है तमाम प्लेयर्स भी वहां पे मौजूद हैं, तो हमने जहां पे सिक्योरिटी बबल का बहुत जिक्र सुना, मैंने जाके पिंडी स्टेडियम के अंदर देखा भी कि सिक्योरिटी बबल्स कैसे मेंटेन हो रहे हैं, तो हमें ये बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत है कि ओवरऑल जो SOPs बाय द क्रिकेटर्स एंड द क्रिकेट बोर्ड एंड जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट एक सेशन को खिलाने जाती है, तो उसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं। अगर आप पॉजिटिव क्रिकेट यहां कहेंगे कि आप एक टेस्ट मैच ड्रॉ कर चुके हैं, फ्लैग आपके ऊपर आया है पिचेस के लिए, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. Speakers, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me great pleasure to take part in a conference which talks about Buddhism, the archaeological sites of Pakistan, and the fact that more exchange can take place between our people from throughout the world, and symbolically a lot of you are here, and that we can encourage tourism. But my attachment to Buddhism has a longer history, much longer. In my search to find myself, long ago, I found myself really. In my search to find myself, I studied a lot of religions. I studied Buddhism, I studied Hinduism, I read the scriptures, I read Christianity, I read Bible, and looked at other religions, of course, also Baha'ism, which was an attempt to bring all religions together and to look and talk about peace. And Akbar's Deen-e-Ilahi, a part of in the subcontinent, and Sikhism. And that was a search for self. It was a search for answers. Why am I here? What is the world all about? What happens? What happens after death? That's the search still continues. In fact, it never ends, you know. And the more I see, the more I understand that man is totally ignorant. And man is a combination of all these things, his desires, and the shortness of life itself brings a different perspective on things, you know. We can have a concept of the hereafter and try and do good. You can have a concept of doing good even here, trying to live in humanity with other people. Humanism by itself becomes a religion later on. When you talk about interfaith harmony. But at the same time,
If you look at the world is full of wars, the world is full of hegemonious attitudes. What is mine will not allow it to be shared. And that is where Buddhism was of extreme importance to me. So therefore, part of my tourism and part of my wife's tourism, Samina Alvi's tourism, had involved these trips to Sri Lanka, for example, to Thailand. And we were fascinated by the temple of the Holy Tooth in Kandy, where Buddha's tooth has been preserved. And we knew less about Pakistan's archaeological sites then. And we traveled to Thailand to look at the stupas and to understand the practice of prayer and to see the people praying there in different forms, Then, interestingly, we decided to go to Tibet. And we reached there. It was a funny, very strange thing which happened. We had a little viral flu when we went into Tibet, and we didn't realize what was happening. As soon as we went to the hotel and our rooms were on the first floor, both of us got tired. And we thought that this must be the virus which we brought from Islam. I think we flew from Islamabad. We have brought this virus from Islamabad. So we rested one day. And the next day we went into the bazaar and again we were tired, so we tried and rested another half a day. But then we thought that we are here only for 4 days, and if we just give it up to all this weakness in the human body, it will not serve us well. So we went out, we went to the Potala Palace, and then we realized, and when we saw there were these honeymooning couples who would, after marriage, would come to the Potala Palace, and all of them, and which is now very common in Pakistan also. You can understand the fact that all of them had these small cans with a tube going into the nose because oxygen was scarce at that height. Which can happen if you go to the Khunjra Pass and elsewhere. And then we realized that it was not our weakness or the virus, it was just lack of oxygen. So it was a very interesting trip even to Potala for the smell of the yak oil which is burnt as a holy ceremony throughout the stairs you climb and all over, and tremendous art resting there, tremendous valuables. So my link to Buddhism is therefore related to that. And the more I read about archaeological sites in Pakistan, I am impressed by the fact, and I have heard people claim, I'm sure Adnan you had claimed that there are more Buddhist artifacts in Pakistan than anywhere in the world. I said that is very interesting. That is very interesting. And the fact that the spread of Buddhism towards Korea, towards Japan, and to many other regions started from the north, from the Swat Valley, from the Hunza Valley. And these monks traveled, and there's some monks even in the current age who travel the same route, just in memory of the monks who preached Buddhism, and they went from Pakistan to Korea. And Pakistan has welcomed over the last few years delegation of venerable monks from Korea, from Thailand, from Sri Lanka, and I think that kind of interaction will help us preserve whatever we have and help us preserve and bring people together. Because today in the world, we do talk about, and we've talked about interfaith harmony for a very long time. But the history of mankind, if you look back, and I was speaking today in the morning on peace and humane war, and I believe that man is stuck with his own psyche. Man has always fought man from the time of Hazrat Adam's children. It took one generation to start what the DNA in our minds is made up of. It includes love, it includes phobias, it includes hate. And I find very frequently that
even, and I had people raise their arms to one question of mine, but I'll come to that later. In these times, we are a mixture of all that. So therefore, exploitation is in our fabric. Love and hate is in our fabric. We like something beautiful, like a child here with innocent expressions, and we all love that. So we have love, and we also have hatred, and we have phobias. So it is very difficult, and therefore the Buddhist struggle, which I imbibed, was the fact that you can never be satisfied as long you have desires. You see, a very important pillar of Buddhism, which I said, my relationship to Buddhism is more than archaeological sites and tourism. My relationship is personal. So many other religions talk about it, and Buddhism also has addressed that. As long as you have desires, you will not have peace. You will not find peace, because desires never end. And I've seen it in my life. My desires never end. And every person comes through that, you know. If you climb this stair, you will have a desire to go higher. If you get this job, you will have a desire to go higher. If you have this income, you will have a desire to go higher. If you have this much power, you will have a desire to go higher. That, in a lot of minds, creates stress. Why do I say in a lot of minds? Because some people may still find happiness in that. So therefore, there was a shift in a number of religions towards monasticism, towards asceticism, giving up things, pleasures of life. And a lot of religions imbibe that, you know, the fact that you fast and you give up one desire, and not only you give up one desire, you make your body and your mind understand the spirituality even of food. That if it is prevented from you, how do you feel? So Buddha himself practiced that, and he was, and all the images of the fasting, Buddha talk about that. That was his search about what the body needs, what does the mind need. Can you give up things in life and still be happy? So that struggle is on with all of you, with me also. And I'm surprised by what I find in people. People who acquire wealth, and I have acquired wealth also, so I am not denigrating that. People who acquire wealth, and they keep on doing that. They never stop. It's an endless thing which doesn't stop. And the richer they are, the hungrier they are. They never stop. And somebody tells me, chalo, iske paas to bahut daulat aa gayi, chalo, ab isko chain pad jayega. It doesn't. In fact, it is, I don't know, in fact it is an addiction. If I were a doctor, for example, if I were a doctor, and somebody would come and tell me and complain about somebody and say he started eating breakfast in the morning, and this is lunch time and he's still eating. Or somebody who started eating at lunch and this is dinner time and is still eating. The doctor will say the person is sick. You see, his body doesn't need all that. So where does somebody draw a line? His body doesn't need all that. So if people acquire wealth and keep on acquiring wealth until they go down under, that is the kind of thing which Buddhism and Buddha preached more. So you curb your desires. Islam says the same thing, curb your desires. And if you curb your desires, then you may see other things in life. Humanity, love for people, understanding people, forgiveness. We are missing that. So we are a combination of emotions. And Buddhism has understood emotion very well. And the nirvana which is talked about is the fact that when you give up your desires, then you give up your desires, stress goes out of your family, reject what your body desires, bring it as a routine, something which you don't have to desire, is just a part. Like air, you keep on breathing air, it's a part of routine, it goes in the background, there's no search for air except when you're suffering from COVID. Then you understand the value of simple air, imagine, and the world has learned that, but have we? We have learned that as a disease.
We have not learned that as something which is a luxury and brings you back to humanity. So ladies and gentlemen, it is a very intriguing journey of my life. And that journey continues as long as I am alive. That journey continues, and Buddhism therefore is a very major part of it. And Pakistan has had, you see, the history of the Indus Valley civilization is anchored in Buddhism, is anchored in Hinduism, and a peaceful transition between Hinduism and Buddhism also. Mohenjo-daro, for example, both peaceful transition, and Buddhism gave way to Hinduism in some areas, and it was spread to Afghanistan, therefore the Bamiyan Buddha site. So this region was also at one time full of Buddhism, and we would like to preserve what we have. Very important. It's a huge struggle always to preserve what we have, to try and restore some damage, at the same time not restore all the damage, to give the implication, to give the feeling to people that this is ancient history, to preserve some of the damage, and to understand these huge civilizations which existed. If you go to Mohenjo-daro, for example, you will be surprised by the fact that 5,000 years ago, 7,000 years ago, there was a grid-like city, Mohenjo-daro. It was based on a grid. It was the houses were on the grid. There was no kachi abadi. There was no transgression on the thoroughfare. The water came from the Indus, went into every house, and the sewage went out in a very planned manner. 5,000 years ago. Imagine. And it gave way. It vanished. Why did it vanish? Only because the dependency of mankind with water was so important that as the river changed its course, the civilization moved away. Civilizations throughout history have been close to water, whether it's the Nile, whether it's the Euphrates, or whether it's the Danube, whether it's the Amazon, and whether it was the Indus Valley civilization. It was our heritage, it is our heritage. And today Pakistan is well placed to talk about peace, because what we see more than ever before, there is polarization between people. More than ever before, this religious anchorage towards peace and understanding of each other. We need an anchorage to give up wars, not to have humanitarian wars, not to have wars at all. It creates misery. And who is most affected? The woman and the children. Wars have always created misery. Tens of millions have died in the last century. Tens of millions have died. And still, we still keep on. We have learned something else, that we don't want to stop wars, but we don't want peace either. We just want to have humanitarian wars. We won't solve the Kashmir issue, but we won't have a full-blown fight on it. So that's the kind of mentality which is progressing in the world. And I believe that going back to peaceful traditions is very important, not for you alone. I asked a question in the morning to the people, because I want you to understand this conflict in the human mind. And I asked a question and asked people to raise their hands. And I'll also ask you here. How many of you get angry? Imagine. The problem is here. We have to manage that. And that by itself is my question for your own reflection. Because anger is against a person. Anger is frustration. Anger leads to reflexes. And I quoted something else also. Those who get angry frequently, like my late father, Allah Ta'ala maghfirat kare, like my late father, he would tell me, and Samina is a good witness, he would tell me that when I get angry, I never say anything bad to anybody, and my anger is in my control, and I knew it was not. So ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here and to talk about peace. Thank you. Assalamu alaikum.
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी आर्ट फेस्टिवल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियाहत के फरोग के लिए अहम इकदाम उठाए गए। पाकिस्तान मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बुद्ध मत समेत तमाम मज़ाहिब ने बकाए बागनी का दर्स दिया है। सिंध वादी की तहजीब के फरोग में बुद्धिज्म का अहम किरदार रहा है। सदर ने कहा कि मोहनजोदड़ो कदीम तहजीबों में काबिल जिक्र है। वो बैनुल-अक़वामी आर्ट फेस्टिवल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो, क्योंकि हम फेडरल गवर्नमेंट जो है हम तो पॉलिसी बना रहे हैं, निसाब बना रहे हैं, जो स्कूल एजुकेशन है वो डिवॉल्व हो चुकी है प्रोविंसेस, और सारे प्रोविंसेस ने बड़ी वसी पैमाने पे टीचर ट्रेनिंग जो है वो शुरू की हुई है। और टीचर ट्रेनिंग के अंदर अब एक पॉसिबिलिटी नज़र आई है जो कि पहले नहीं थी, कि टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल है कि बजाय टीचर्स को आप एक सेंटर में लाएं, आप उनको जहाँ पे उनकी जॉब है वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो अभी वर्ल्ड बैंक के साथ हम मिलकर एक प्रोजेक्ट को बना रहे हैं जिसके अंदर टीचर ट्रेनिंग जो है वो ऑन द जॉब होगी, रादर देन टीचर्स कमिंग टू ए फैसिलिटी एंड सो ऑन। सो उसकी वजह से बहुत सारा हो जाए। ठीक है जी। सर ये एक क्वेश्चन है, जस्ट वन क्वेश्चन। जी जी, आपने कहा कि टॉप 50 यूनिवर्सिटीज जो यूएसए में होंगी उसके लिए आप फंडिंग स्टूडेंट्स को करेंगे, वो व्हाई इट इज पर्टिकुलर टू द यूएसए, व्हाई नॉट टॉप 50 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज? हम पहले वो यूएस के साथ एक नॉलेज कॉरिडोर का एक पूरा एक एग्रीमेंट हुआ था जिसकी वजह से हम कर रहे हैं, लेकिन आई एग्री विद यू, हम अब उसको एक्सटेंड कर रहे हैं टू दी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। हाउसिंग के लिए फंडिंग है, बाकी मामला के लिए फंडिंग है। गरीब जो स्टूडेंट पाकिस्तान के हैं बहुत ब्रिलियंट हैं, लेकिन वो जब यूके या यूएसए या यूरोप में एडमिशन लेते हैं उसके लिए भी फाइनेंसिंग का सिलसिला हो सकता है कि वो फाइनेंस ऐसा हो कि गरीब लोगों के बच्चे वहाँ जाने पड़ सकते। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने गरीब स्टूडेंट्स के लिए जितनी स्कॉलरशिप दी हैं, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। 50,000 स्कॉलरशिप पर ईयर हम दे रहे हैं गरीब बच्चों को जो कि पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी में। बाकी हम महसूस करते हैं कि जो ओवरसीज अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को हम नहीं स्कॉलरशिप देते हैं। हाँ, मास्टर्स के लिए कुछ देते हैं और बाकी PhD करते हैं, जो PhD के लिए उसको करते हैं। जी आप बताएं। ये माइक जी, जरा माइक खवातीन को भी दे दें।